हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे और टॉपिक्स पे जो हमारे भी मार्केट ओपन होते ही काम आएंगे। देखिए, रूरल एफएमजी सेल्स rise sharply in physical fourth quarter on higher gross stock value. Sales of FMG product in rural area rose faster than urban sales in the fourth quarter of 2022 to 23. Sales for the whole year grew faster in rural area as well than urban. According to data from Bizom, rural consumer goods sales rose 16% in the 3 months to January, showing 8.9% growth for the full financial year. Urban sales grew 7.9% in the fourth quarter, ending the full year with 5.5%. Overall, FMCG sales grew 14% in the fourth quarter and 7.8% in the entire financial year. तो गाइस इसके लिए क्या मतलब इतनी ग्रोथ तो हुई इस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि दिस ग्रोथ कैन नॉट बी सीन एज एन इंडिकेशन ऑफ एंड ओवरऑल रिकवरी। मतलब इस ग्रोथ के कारण हमें एफएमजीजी के जो स्टॉक्स है उसके अंदर रिकवरी अभी देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि काफी ज्यादा पर्सनल केयर कन्फेक्शनरी वाले ही स्टॉक्स बिक रहे हैं। इतना कुछ मतलब और आप कह सकते हैं बड़े तौर पे ग्रोसरी में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू हर्ट कंजम्पशन। वही नेक्स्ट गाइस, sovereign bonds fall past psychologically important 7% lowest since September. Yield on 5-year Indian sovereign bonds have dipped below the psychologically significant 7%, touching their lowest level since September, as the odds shortened on a protracted policy pause on interest rates. The central bank last week unexpectedly left the cost of funds unchanged for the first time in nearly a year. Profit taking towards end of the trading session and erased gain for these bonds. But outlook on short-term sovereign debt of up to 3 and 5-year maturities remain favorable. Bond prices and yield move in opposite direction. Guys, वही next बात करें कि why it is important. There are increasing expectations. The unexpected pause in monetary tightening will eventually be a pivot for broader rate trajectory. It remains to be seen if these expectations are realized. Stubborn retail inflation and could play spoil sport. मतलब अभी इसके अंदर ओवरऑल आपको एक न्यू करेक्शन एंड ट्रेंड की रिगार्डिंग कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता। हाँ, स्टॉक है थोड़ा सा उसको अपने नजर में बनाकर चलें। थर्ड गाइस, प्राइवेट फोरकास्टर प्रेडिक्ट्स बिलो एवरेज मॉनसून पॉजिंग रिस्की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, हमारी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ खराब होती है तो हमारे स्टॉक पे भी असर पड़ता है। इसके इंडिया में सी बिलो नॉर्मल रेंज दिस ईयर with the onset of the southwest monsoon between July and September, like delay by about 10 to 15 days. According to private forecaster Skymet Weather Services, Skymet in its first forecast for monsoon 2023 said rainfall will be 94% of the long period average due to the impact of the El Niño weather pattern, which is linked to drought or poor rainfall in India. Why it's important? The forecast is concerned over farm output, posing mounting risks to rural income, consumption, and economic growth. It could deepen the farming crisis, which still employ the largest segment of the country's population. Guys, देखिए, अगर फिर से रेनफॉल होता है, आपको पता है कितनी सारी फसलें खराब होंगी और फसलों से रिलेटेड जितनी भी हमारे कंपनीज हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कंजप्शन पे, हमारी इनकम पे और इकोनॉमिक पे असर देखने को मिल सकता है। Guys, next है corporate India likely to report highly profitable fiscal fourth quarters. Brokers expect India company to report a rise in earnings for the March quarter of 2022 to 23 after a relatively muted showing in the preceding 2 quarters. The growth is expected to be led by financial services, FMCG firms, and automakers. The combined net profit of the Nifty companies, excluding Adani Enterprises, is expected to have grown 15% to rupees 1.77 lakh crore from rupees 1.53 lakh a year ago. It was up 9.3 and 1.4% year on year in third and second quarters respectively. Why it's important?
Despite the expected uptick in net profit, revenue growth might be losing steam due to sluggish demand and decline in commodity prices, which impact the price realizations of upstream firms. And guys, अब next है हमारा State Bank to raise up to $2 billion through overseas bond sales in 2023 to 24. The State Bank of India, the country's biggest lender, planned to garner up to $2 billion in 2023 to 24 through overseas bond sales, dwarfing last year's foreign fundraise by three of its closest private sector rivals, including HDFC Bank. Its board will meet on April 18 to consider the fundraising through sales of senior unsecured notes. State Bank is expected to issue these bonds to overseas investors in multiple tranches. Why it's important? Despite the uncertainty in the global bond market due to the rising interest rate scenario, SBI is likely to take advantage of investor interest for bonds of state-run companies considered quasi sovereign from an investment perspective. Guys, अगर बॉन्ड से रिलेटेड अगर इनको कुछ भी अच्छी इनकम होती है और अपना ये अपने फॉरेन में भी अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर इंटरेस्ट ये सब गेन कर पाते हैं, तो आपको पता है अगर हमारे बैंक को फायदा होगा तो वही कहीं ना कहीं हमें इसके स्टॉक प्राइस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे. Manipal Hospital close to acquiring KIMC Health for rupees 4,000 crore. Manipal Hospital, backed by Singapore sovereign investor to TMASC, is close to acquiring Kerala-based hospital chains KIMS Health for rupees 3,504,000 crore. Manipal intended to buy the stake held by True North, which invested $200 million in KMC Group in March 2017. Why it's important? Once the deal goes through, it will be the Manipal Group's third acquisition after MRI Hospitals and Columbia Asia. The acquisition could catapult Manipal to India's largest hospital chain. Next, guys, Reliance WH Smith and others show interest in buying future retails. E-scooter drive electric vehicle sales to record 1 million in 2022-23. And next आप वहीं देखेंगे कि stock broker Zerodha expect 20% jump in revenue and profit. The volatility in the stock market is sparked by geopolitical tension that is impacting supply chains and recessionary fears and interest rate hike could be dependent. नेक्स्ट गाइस, अगर वही हम बात करें हम अपने नेक्स्ट की गवर्नमेंट टर्न ऑन हीट ऑन ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज. गाइस, तो ये तो आज के कुछ हॉट टॉपिक्स रहे. आप अगर मैंने जो नहीं आपको मेरी करके पूरे बताए तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं. इनको आज के दिन मार्केट की क्लोज मार्केट जैसी ओपन होती है तो आपको इनको ध्यान में रखना है सबसे पहले, देन उसके बाद मार्केट को देखना है. इनसे रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं, जो भी न्यूज है, इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको वॉच में रखना है और जहां आपको प्रॉफिट लगे वहां पर प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है और जहां आपको लगे सेलिंग है तो वहां पर सेलिंग करते हुए प्रॉफिट बुक करके चलना है. सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.